नेगेटिव आ गई रिपोर्ट। और write it again. What is notice? So notice means generally an announcement. Notice means a notification as well. Both can be synonyms to each other, notification and notice, but slightly different in their natures. Notices are more common and the notifications are more legal. So we can use the notice word everywhere, but notifications are very peculiar in their nature. So what is notice then? Why we write the notice? We will understand this first. So generally notice means an announcement. If I want to make an announcement in an institution or in a locality or in a group of people, so the notices are the best form of writing to communicate my information, my announcement to the all. Notice is also issued to warn someone. So the notices are also used for giving warnings to someone by some law courts and some other. So that is a different matter. We will study this to the context of your level, to the context of your syllabus. That is notice writing for an announcement. So what are the things we should keep in our mind? At the end of this topic, we will go to some examples through the multimedia, and then we will understand it better. So before going there, we will start the notice with its again two things. One is format, another is content. As far format is concerned, as you know, in all sort of creative writing, we must know the format of that form of creative writing. These two terms are being used repeatedly in every session. One is format, one is content. Though there is one more term, that is expression. वो expression क्या होता है? The way you write, that is yours only. So one cannot teach you the expression because you take the sentence out of your thinking process. So here we can discuss only notice and content. So the format and the content. As far format is concerned, we will start at the top of your notice. Here you will write name of institution. सबसे ऊपर क्या लिखना है? Name of institution. Like college, Deval, government inter college, Masi. You will write the name of institution here on the top only. After that, here on the left side, you will write date. The date of issuance of that notice. What is the date on which the notice will be issued or is issued? जिस डेट को हम नोटिस लिख रहे हैं, जैसे आज की डेट लिख रहे हैं, तो 22/4/2020, और भी फॉर्मेट है डेट को लिखने के, अप्रैल 22nd 20, then comma, then 2020, then full stop. After writing date, again in the center we write notice in the capital letter or in this form. We write the notice in the center. After writing this this notice, here at the center we write the title of our notice. What is this notice is all about? We write here at the center. So what we have learned so far, writing the name of institution, अपने स्कूल का नाम लिखना है, यहाँ पे डेट लिखनी है उस दिन की जिस दिन आप लिख रहे हैं, यहाँ पे notice as it is, and यहाँ पे title of your notice. Suppose you are writing a notice on inter-house dance competition. So here you will write inter-house dance competition. Why we write the why we write the title? In some of the notices you will find that they are not saying to write a title here, but it should be written so that
the person who have interest in this area will see the title. If it relates, if it has some concern, if it has some interest with him, he will read the body of the notice. So this is important to write the title of the notice. After writing the title, we move ahead. Now here we write the body of the notice. Here we should write the body. Body means all the content of our notice. What we want to say, what is the purpose of this notice, that should be written here in this part only, the body. Suppose you are writing inter-house dance competition. So you will start with, all the students are hereby informed that the school cultural club is going to organize an inter-house dance competition. The dance competition will be on such and such date at such and such place. And if there is anything other that you want to add, like only classical format or the folk format of the dance will be entertained, you will write it here. After writing this information, you will again in the same paragraph, you will write, all the interested ones may give their names, may contact to undersign, may contact, you can write this. So this will be the body of your notice. After writing this, now we move to the most important part of the notice, that is here we write name and designation together with signature. Here we will write name, then designation, and on the top of the name there will be a signature of the person who is issuing the notice. So why we should write this? Because notices are only issued by some authority, someone who has a power. जिसके पास कुछ अधिकार है वही दूसरे को नोटिस लिखेगा. तो ये डांस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करने का राइट किसका होगा स्कूल में? ऑब्वियसली प्रिंसिपल सर का होगा. सो हियर यू कैन राइट द नेम ऑफ योर प्रिंसिपल, डेजिग्नेशन मीन्स उनका पद क्या है, दैट विल ऑब्वियसली प्रिंसिपल, and his signature, because any activity cannot take place in a school without the permission of principal. So then it will be an authentic notice. अगर ये वाला part छोड़ दिया आपने, then this notice will not be considered as notice. This will be just a piece of information. So again, to remind you, if you have some cultural club in your school and cultural club is assigned to issue such type of notices, then here that secretary or the manager or the in charge of cultural committee name will be written here. Suppose Mohan is the secretary of cultural committee of your school. Excuse me. So you will write the name Mohan here. Cultural committee in charge, cultural committee will be his designation. And then his signature should also be there. So after doing this, we just have a quick recap about the body of this. Is very important to write the body, what should be included and what should not be. For this, we need to understand the content part. So we move to the content. What should be the content of a notice? What should be the content of notice? As far as content is concerned, if you are writing a notice for your exam,
So the content will be given in the, means the subject matter of your notice would be given in the question itself. If you are writing, but you should not prepare everything for examination, you should use it in your school. You can write a notice for any occasion, even for PTM, parent teacher meeting. You can write a notice and you can attach it, you can paste it on the notice board, make a notice board in your school, and you can take this initiative to write notice for every event, every order, for every holiday. You can write a notice on that notice board. So content, you know the content, what I am writing about. But how to write? There are certain things. The language of the content should be very formal. If I write formal writing means we need not to make the personal type of expression in our notice. Like we will love to see the dance and this and that. So we will not express our feeling. We are only writing the facts. It is called formal language. Not to be informal in writing. Official language में उसे लिखते हैं. Simply हम ऐसे लिखते हैं जिससे ये लगे कि ये एक सिर्फ इंफॉर्मेशन है, ये किसी एक आदमी का दूसरे आदमी के लिए कोई इंडिविजुअल कम्युनिकेशन नहीं है. So to make a piece of information and to write a piece of emotion. If we share something that is relevant to our own interest, relevant to our own feelings, तो वो informal हो जाता है. So we will write the formal sort of language. Then we should also be very to the point. To the point. We should write our notice to the point. To the point means if I am writing a notice on inter-house dance competition, so I will write the occasion. Occasion क्या है? Dance competition. उसका venue क्या है? Venue is the hall of the school. Date क्या है? Suppose 30th of April 2020. उसकी date है. And time क्या है? From 1 to 2 in the afternoon. Afternoon में 1 से 2 बजे. So I will give this detail to the point instead of giving any other unnecessary information. So I need to be very to the point and authoritative. The language should be authoritative. Shouldn't be very much requesting type, because this is an authority who is signing the notice. So your language should be, you are informed, you are requested, you are ordered. Sometimes you can also write this. You are instructed. So you will write an authoritative language when you write a notice. So other than this, we also make some sort of special, we can write some improvisation in our notice. कुछ और चीजें हम जोड़ते हैं, वो क्या होंगी? जैसे to write capital letters, जो ये हमारे important points हैं, important points of notice in capital letter. जो important points क्या हैं? जिनको हमने highlight करना है. So either you use capital letters or you can underline. So these are the ways how we can highlight our important points. So कौन से points important होंगे? Yes, our date, our venue, and the place of, sorry, the venue, date, and time. What is the time? What is the venue? And what is the occasion? If you are
having some sort of condition, like in your inter-house dance competition, you want to include the participants who have interest in classicals and folk. So you can write this point, because taking this point as important point, you can also highlight the points. Only classical and folk dancer will be entertained, will be admitted for dance competition, will be permitted for dance competition. So ऐसे हम अपने नोटिस को, कि हमारी लैंग्वेज होगी, उसमें हमने क्या करना है, इन द बिगिनिंग का जो सेंटेंस है, प्रॉब्लम क्या होती है ऑल सॉर्ट ऑफ राइटिंग, हम शुरुआत कैसे करें. ये जो फर्स्ट नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन था, डेट थी, टाइटल था, वी हैव रिटन इट. नाउ द थिंग इज, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि हम स्टार्ट कैसे करें. दिस इज मोस्ट likely to be asked in the classroom, this question, कि हमें चाहे लेटर है, चाहे नोटिस मेकिंग है, the first sentence we stuck there, how to start. So the you should keep this in your mind. You make your own sentence. कोई भी एक पहला सेंटेंस अपना बना लें और उस सेंटेंस को आप दिमाग में रखें. All the students are hereby informed. This is to inform all the students. और you can also start like, कैसे start कर सकते हैं, school is going to organize. So these are some construction, these are the some sentences with which we can start our notice. So hope you would have understood. So for a quick recap, we go to our smart class. So here you will see these colorful boxes are here. You remember, you are not supposed to make these boxes. आपने ऐसे box नहीं बनाने हैं, आपने सिंपली, आपको हिंट के लिए बॉक्स बनाए गए हैं. यहाँ पे आप लिखेंगे, जो रेड है उसमें लिखेंगे नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन. यहाँ पे आप लिखेंगे नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, माने आपके स्कूल का नाम. हाँ, बॉक्स नहीं करना आपने सिर्फ लिखना है स्कूल का नाम. बॉक्स आप पूरे पे बनाएंगे तो पूरा नोटिस एक बॉक्स फॉर्म में होगा. ये अलग अलग बॉक्सेस में नहीं लिखना है. रिमेंबर दिस. आपने यहाँ पे एक हिंट के लिए दिया है, मैंने वहां भी बॉक्स बना के बताया था. तो यहाँ पे नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, योर नेम, डेट, जिस डेट को आप इश्यू करेंगे, नोटिस, टाइटल ऑफ द नोटिस. मतलब अभी हमने इंटर हाउस डांस कंपटीशन किया, तो हो सकता है आप इंटर हाउस पेंटिंग कंपटीशन पे करें, या हो सकता है अभी आपके जो है जो 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे आने वाला, उस दिन आप कोई कंपटीशन करें. पीटीएम मीटिंग आप यहाँ पे लिख सकते हैं. सो ये जो टाइटल ऑफ द नोटिस है यहाँ पे लिखेंगे. फिर उसके बाद बॉडी पाएंगे. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग टू यू अबाउट द बॉडी. आपका सिंगल पैराग्राफ होगा, बीच में आप हाईलाइट करने के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हैं, उनको आप अंडरलाइन कर सकते हैं, और साथ में उनको आप बुलेटेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं. इन बिटवीन द लाइन्स, आप लाइन्स के बीच में बुलेट फॉर्म में आप अपना वेन्यू मीन्स प्लेस, कहाँ पे प्रोग्राम होगा, डेट और टाइम, उसको आप बुलेटेड पॉइंट में या कैपिटल लेटर में या अंडरलाइन करके लिखेंगे यहीं इस बॉडी में. अगेन आई रिमाइंड यू कि आपने ऐसे डब्बे बना के नहीं लिखना है. आपने यहाँ पर सिर्फ वो बातें लिखनी है जो हिंट की गई हैं बॉक्स में. अलग अलग कलर इसलिए दिए हैं ताकि हम इसके 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर पाए. यहाँ पे नोटिस का ये जो बॉक्स है, इसको लिख लेने के बाद, अपनी इंफॉर्मेशन लिख लेने के बाद, अब ये होगा कि सपोज मैंने ये पढ़ लिया, अब मैं किसे कांटेक्ट करूं. सपोज आई वांट टू टेक पार्ट इन पेंटिंग कंपटीशन, देन whom should I contact to? So in that case, we should give the name and designation. This particular point serves two things. One is the name of the person who is issuing, means it makes the notice official, and second, it also gives the hint to the participants where they should contact to. तो ये हमारा फॉर्मेट है. अब हम इस फॉर्मेट के बेसिस पे एक नोटिस यहाँ पे डेवलप करेंगे. सो मैंने अपने स्कूल का नाम लिखा है, देखिए, राजीव गांधी नवोदय विद्यालय देहरादून. ये मेरा नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन हो गया. एंड देन द नेक्स्ट डेट, ये मैंने, देखिए, जनवरी 21 मैं एक टाइपिंग मिस्टेक है, 21 ST 2020 हो गया. देन नोटिस,
उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है टाइटल। अब आप खुद बताएंगे और अपने आप आता नहीं आता देखते हैं। आपने नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन लिख दिया, आपने डेट लिख दी, आपने नोटिस लिख दिया, फिर आपने टाइटल ऑफ द नोटिस लिख दिया। अब आगे क्या होगा? ऑब्वियसली द बॉडी। बॉडी में क्या लिखा है देखिए, all the students are hereby informed that the RGNV Dehradun is going to organize a cultural program with all pomp and show to mark forthcoming 65th, ये पुराना था तो 65th है, अभी 65th नहीं होगा, इंडियन रिपब्लिक डे इन द मल्टीपर्पज हॉल ऑफ द स्कूल। अब ये क्योंकि स्लाइड शो में आगे चला गया, ये स्कूल यहीं पाएगा। सो यू all are requested to ensure your presence on the set date at 8 AM। तो ये मेरी लैंग्वेज हो गई, मैंने हाईलाइट कर दिया, मैंने ओकेजन हाईलाइट कर दिया, मैंने वेन्यू हाईलाइट कर दिया। तो और साथ में आपने पीछे देखा होगा यहाँ पे हमने टाइम भी हाईलाइट कर दिया 8 AM। तो डेट ऑलरेडी ऑब्वियस है रिपब्लिक डे की, और टाइम एंड वेन्यू इज ऑलरेडी हाईलाइटेड। फिर हम फाइनली देखिए यहाँ पे आते हैं, इसमें हमने क्या कर दिया है, ये हमारा नेम एंड डेजिग्नेशन है, ये हमारा नेम एंड डेजिग्नेशन है। नेक्स्ट, यहां पे हम क्या करेंगे, इसमें साइन जरूर करेंगे, वी विल पुट आवर सिग्नेचर। तो ये हमारा एक टाइटल का फॉर्मेट, एक नोटिस का फॉर्मेट था, जिसको हम इस फॉर्मेट में बनाएंगे। जा